दोस्तों मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष। यहाँ मैं कैनबरा के थॉर्स हैमर जो कि रिसाइकल्स जॉइनरी आप देख रहे हैं, फर्नीचर मेकर्स हैं। यहाँ पे स्किल्ड वुमेन का वर्कशॉप चल रहा है। जनरली आपने देखा होगा कि आदमी या पुरुष ही ट्रेडी का काम करते हैं, लेकिन इस समय जी हाँ, इस समय औरतें यहाँ पर ट्रेडीज का काम कर रही हैं, आरी चला रही हैं, हथौड़ा चला रही हैं। चलिए अंदर देखते हैं क्या चल रहा है और मिलते हैं कुछ वुमेन के साथ या औरतों के साथ। मैं गपशप करता हूँ, बातें करता हूँ। आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। हैप्पी दिवाली थॉर्स हैमर। चलिए अंदर ले चलते हैं आपको। फिशविक में, कैनबरा के फिशविक 10 मिलजुरा स्ट्रीट पे है थॉर्स हैमर, और अंदर आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। चलिए, ये है इनका मेन ऑफिस। ये है वर्कशॉप। लेट्स फाइंड इट आउट क्या हो रहा है। ये देखिए वर्कशॉप, आवाज़ें आ रही हैं। यस, मशीन चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही है मेरे को, और अभी आपको दिखाई भी देगी। लगे रहिए, देखते रहिए। कई सारे मशीनें हैं जो शायद हम कभी देखते नहीं हैं। ये देखिए, नमस्कार, हमारे साथ सुनीता जी हैं। नमस्कार सुनीता जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है रेडियो मनपसंद में। और एक मैं टूर कर लूँ, क्या चल रहा है उस आपके यहाँ पे आप टूर कराइए। ये जो है हमारी वर्कशॉप हो रही है या ये सॉल्ट which is supporting and linking trades women। अच्छा, एक ग्रुप है इन ट्रेड, ट्रेड्स वुमेन इन ट्रेड, उनका ग्रुप है, एसोसिएशन है। तो वो पिछले 8 साल से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं स्कूल्स में, और हमारी तरह एडल्ट वुमेन के लिए भी, टू गेट देम इंटरेस्टेड इन ट्रेड्स। पिछले 25 साल से ऑस्ट्रेलिया में डिग्रीज के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन हुआ है, और लोग ज़्यादातर डिग्रीज करना चाहते हैं, और ट्रेड्स, इसीलिए ट्रेड्स मेन और ट्रेड्स विमेन की शॉर्टेज हो गई है। एंड यू नो मेनी पीपल, मेरी तरह जो है, कई लोग बहुत खुश होते हैं अगर मुझे मौका मिलता है ऐसे ना कुछ करने का। बिल्कुल एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसलिए अब हम सीख रहे हैं और हम दूसरों को भी सिखा रहे हैं। बढ़िया। देखा, ठोका पीटी चल रही है। आइए इधर आप। ये दिस इज द ग्रुप, सॉल्ट इज द ग्रुप, या जो हमें ट्रेन कर रहे हैं। आपको ट्रेन कर रहे हैं। तो आप ट्रेनर हैं या ट्रेनी हैं या कैसे, आपका तो रोल आज क्या तो है? हम कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा। और आज वुमेन्स शेड कैनबरा हम ये सब ऑर्गेनाइज हमने किया है। Very और nice. क्योंकि मैंने खुद यही वाली ट्रेनिंग की थी मैंने सिडनी क्वेकर्स हिल में। वहाँ जो वुमेन्स शेड है उसमें, और वहाँ से मैंने सीखा था। और जब मैं कैनबरा में मूव किया इस साल करीब मार्च अप्रैल में, तब मैंने कहा कि तब जो है मैं यहाँ पर कैनबरा में भी वही शुरू करना चाहती थी जो मैंने एक्सपीरियंस किया क्वेकर्स हिल में। मैं अपने हाथ से बहुत चीज़ें बनाती हूँ, और अक्सर यूट्यूब और ऐसे सीख कर अपनी आई रिन्यू एंड अपसाइकल अ लॉट ऑफ फर्नीचर। तो मुझे औजार के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है, पेंट करना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं अपने घर में कोई चीज़ फिक्स कर देती हूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन, क्या बात, बहुत तसल्ली मिलती है, और उस चीज़ को देख के इतनी खुशी होती है। और कम से कम मैं अपनी तरह से अपनी मर्जी का बना सकती हूँ। अक्सर क्या होता है, आप अगर किसी ट्रेड्स पर्सन को बुलाए,
आप बोलोगे मुझे ना ऐसे चाहिए, वो अक्सर बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं, बस आप इतना ऐसे जो मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ, अक्सर बता रही तो ट्रेड्स वुमेन मुझे बहुत ही कम मिले। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में बिजली की चीज़ें बदलवाई तो मुझे एक फीमेल स्पार्क की, शी केम विद हर फादर, उनका बिजनेस है। अच्छा। और आज भी आप देख रहे हो हमारे जितने ट्रेनर्स हैं सब औरतें हैं। Very इसमें nice. से हाँ। 2 ने अपना करियर जो है हाँ, एज मैच्योर एज अप्रेंटिस शुरू किया था, बाकी ने अप्रेंटिस अलग अलग चीज में उनकी ट्रेड्स वो है। अच्छा। खासियत। चलिए ये So tools down, guys. We're going to stop for half an hour for lunch. I'm here. You guys have put the tools down. क्या देखिए क्या काम चल रहा है। It's time for a break. बहुत मेहनत की है हमारे। Done very hard work. Time for a break. Get some food and drink. ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी सारी महिलाएं ट्रेडीज में। हाय गाइस। Hello. So carpentry is not my trade. So I'm an arborist and horticulturalist, Right. which I really, really love. I just think I love doing these workshops because I just love empowering women with these basic life skills Right. to get you through life. Yourself? My name is Yashi. I've been in Canberra for 5 years, and I decided to come to this workshop today because I think a lot of the time we think that the trades aren't necessary for us to learn, or that they are unskilled labour, but Right. actually I think this takes a lot of skills. Yeah. I really want to learn how to do this, and I think that everyone should have these tools and know how to do things around their house and how to actually have these skills in everyday life. So, Wonderful. Do you love doing it? You come every Saturday? Yeah, this is my first time, but I've already signed up for next Saturday. Wonderful. So I'll be coming next Saturday and doing my own project. What have you made today? Today we are making a Toolbox. basically a toolbox, or you can, and it's going to have a handle here. All so right. It's going to be like this. Yeah, it's coming out nicely. Yeah. And it's fitting very well. Yes, it is. Yeah, hopefully we'll see. Well done. It's gonna sit like this. Have you done such thing before while you were growing up? No, I don't think. I think that, again, like I said, I don't think people put enough weight or enough value on labour like this, or on trades like this. People don't really see it as something worth putting their time and effort into. So I actually found it really hard to find a place that allowed me to experiment and allowed me to do this. So Oh, okay. yeah, so I'm really glad that this exists. Feeling very proud, very satisfied. Yeah, very empowering. And you will be a tradie in your as a profession. You may or may. Yeah, I may, but I think it's also good to know if I do need a professional to come do something at my house, at least I know what they're talking about. Okay. And I know how I can do it myself in the future. And small things you can fix yourself. Yes. Like a door handle or something in the kitchen which Yeah. goes bad, or a bed or something, isn't it? Yeah, exactly. And that's why I want to learn how to do this, so I can do it myself Wonderful. when I need it. Yeah, it's a very empowering feeling. Wow. Like I can do this. Call it Hindi mein Atmanirbhar. Okay. You don't have to be dependent on anybody. Yes, exactly. Wonderful. Yes, you can be your own. Thanks, Yashi. Thank you. Keep doing it. Lage raho. All the best. Thank you. बड़े ध्यान से. Would you like to tell me what are you girls making? I don't know. You don't know? Box with a handle. Box with a handle. Yeah. It's going to be divided Okay. into 2. So, there'll be a hole there, handle thing, Right. and that's, actually, we've got to cut that out, we've got to cut that Right. out, and then we've got to put that in this. Like that, see? Wonderful. Oh, it's like a tradie box, isn't it? You can put your tools in there. Yeah, we will. We will. Except don't have Absolutely. this long enough. Doesn't matter. Yeah. Screwdrivers can go there. Screws can go there. Yeah. True, that's true. Yeah, So and- we're learning how to handle tools safely and
how to use the saw and Yeah. all that, which is great. Wonderful. And what made you come into this field or learn this new well, I'd skill? like to make things for my home. Wonderful. Yeah. And I don't have any space to do that Okay. at my home. It's like a hobby, maybe? Yeah, why not? Save money, hopefully. Save money. Tradies are very expensive. Maybe you recycle things. Just learn new skills, feel confident if you ever picked up a tool, I don't know. Yeah. Had a bit of, There's a few things I want to make from home. Yep. we did had some old chairs and we took the bases of them and we were covering the cushions. Right. And I found that really good because Wonderful. you looked at the integrity of the chair and you sanded it all back and then covered the cushions and that was really good. That was great fun. Feel of satisfaction, isn't it? Yeah, Isn't yeah, it? it was, you know. and- All right. Time for a break? Thank you. Yes, thanks. Thanks. Working busily out there. So the thing is, we had invited some media and we had invited some ministers as well, because we feel we do need to have, we do need to market ourselves to let people know what we are doing. So we had Minister Rebecca Vassarotti here, and we had the leader of the opposition, Elizabeth Lee, from the ACT, and we had two of our funders. One is the Narrabunga Medical Practice. They gave us $5,000, and we got another funding from Helping Hands, Chief Minister's. Yeah, the Chief Minister's Charitable Fund. So that was administered by Hands Across Canberra, and it was Peter Gordon who came today to give us that news. So they've donated 10,000 to Womens Shed Canberra. And then it's wonderful. And that particular funding is for us to get tutors for next year, so that we can have more structured workshops like this, like today. And of course, they also wanted to meet the SALT trainers and get to know about them too. So we did brief them about you while everyone was busy working, and who else? And we did have the representative from Men's Link, because next year we are hoping to expand our timings a bit more, but more for a slightly different target group that will be more targeted expansion. So yes, we will. That's what we were doing, and we were thanking all our sponsors. So which is Bunnings, Thor's Hammer, the Green Shed, our major sponsors. Yes, that was what it was about. Well done. Well done. दोस्तों मेरे साथ हैं सुनीता जी एंड रॉबी, जिन्होंने ये वुमेन्स शेड कैनबरा की शुरुआत की थी इन सितंबर. टेल अस अबाउट योर जर्नी. कहाँ से शुरुआत हुई, आप दोनों कैसे मिली? तो मैं रॉबी को मिली, कम्युनिटी गार्डन है हमारा, किंगस्टन कम्युनिटी गार्डन, उसमें मिली मार्च में, और हम ऐसे ही बातचीत करते थे. फिर मई में कम्युनिटी जो फ्लोरियाड कम्युनिटी फ्लोरियाड था, उसमें मैं और रॉबी मिले 24th May को. 24th of May. Okay. So on that day we had 62 volunteers come to help plant over 8,000 bulbs and annuals in Jardine Street, Kingston. And towards the end of that day, Sunita and I were talking about the formation of the Womens Shed Canberra. And Sunita. क्योंकि उस समय हम लोग दोनों को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था कोविड-19 की वजह से. और मैं जो सिडनी में क्वेकर्स हिल जो विमेंस शेड है उसमें थोड़ा जाके काम करती थी, और ये जो आज हमारे पीछे वर्कशॉप हो रहा है सॉल्ट वर्कशॉप, वो मैंने भी अटेंड किया था, बेसिक वर्कशॉप वहाँ सिडनी में. सो आई डिस्कस्ड, वो सब मैंने रॉबी के साथ डिस्कस किया. And then Robby said to me, "Oh, we have to. We have to make one. There isn't one in Canberra. Let's just create it." Wonderful. तो आपने इनिशिएट किया and रॉबी ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब दोनों मिलके इम्प्लीमेंट किया. No, but Robby has huge community connections. अच्छा. And Robby is from Canberra. तो Robby Canberra से है,
तो रॉबी को इतना कुछ पता कैनबरा के बारे में, तो both of us discuss कि कहाँ हम करें, तो we said Thor's hammer. Yes, that's right. And it was Sunita's partner, actually, John, that suggested, why don't you girls go in and see Thor? So we said, yeah, let's do it. We came in and Sunita presented the proposal to Thor about what we were thinking to do. Right. And then Yeah. he was और Thor so agreeable, wasn't he? Yeah. और Thor जो है वो उन्होंने तुरंत मान लिया और अच्छा। उन्होंने कहा कि अच्छा आप हमें और इसके बारे में डिटेल्स बताइए। फिर हमने मिलके उनको एक प्रपोजल भेजा और उन्होंने हमको जगह दिखाई है and he actually Yeah, and he actually told us that, he had already 3 tradeswomen working on Right, site in right. his team. Uh-huh. And he was so positive about having us come and take up the venue and bring other women into Womens Shed Canberra. Wonderful. So we were promised that we could have the venue as long as we had the insurance. Exactly. And that was our next challenge, wasn't it? उसके बाद हमको इंश्योरेंस के लिए थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि इंश्योरेंस बहुत महंगी होती है और हमारे पास तो हम तो शुरुआत कर रहे थे ना फंडिंग ना कुछ। बिल्कुल। लेकिन फिर मेंस शेड रॉबी जो हमारी कम्युनिटी एंगेजमेंट है एकदम धुरंधर कम्युनिटी बिंदास। एंगेजमेंट नहीं धुरंधर कम्युनिटी अच्छा, धुरंधर है। शी इज अ रियल हीरो हीरोइन है। I am. No. अच्छा उन्होंने जो है उन्होंने एक मेंस शेड में जिम थॉर्टन से बात की और जो अच्छा। जिम थॉर्टन यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं रीजनल मेंस शेड के, उन्होंने हमको बहुत गाइड किया और अब हम जो है ऑस्ट्रेलियन मेंस शेड एसोसिएशन के अंदर हैं हम लोग और उसके ज़रिए हमको इंश्योरेंस मिला विच वाज रियली Very good. बाकी फिर जो है रॉबी हमारी बहुत अच्छी फंडिंग ऑपरेटर ये चीज़ बहुत तुरंत वो जो है फंडिंग दिखती है और तुरंत हमको फंडिंग मिल जाती है। So I'm telling them about your funding. Where did you get the funds from? Robbie will tell you. Yeah, so our first lot of funding comes from the individual members themselves. Right. So each member pays a $10 joining fee and Right. a $50 annual fee. So we had that money to start with coming in. And then we had a phone call from Dr. Sue Bowden, Right. who I had been connected to through the early childhood service that I was director of. Right. And she came to see us at the East Hotel where we have our Thursday office and presented to us, the scenario of, look, let me know what you're wanting to achieve through Womens Shed Canberra. Send me a letter and then we can put you as one of the recipients of our community trust fund, which they then donated us $5,000 as part wonderful. of that What a great community start, chest yeah. fund. Yeah. And then probably 3 weeks ago I was going to the Gold Coast and I got a phone call from a friend saying you've got to put an application in for this fund. The only trouble is you have to have it in by midnight tonight. So I was at the Canberra airport flying Right. to the Gold Coast, and in my mind I'm thinking, should I do it or should I just let it go because it's time, we're time poor. So फिर रात Yeah. को 9 बजे 9:30 बजे इनका टेक्स्ट आया रॉबी का मुझे कि ऐसा है बैंक स्टेटमेंट भेजिए तुरंत। Okay. मैंने कहा आप छुट्टी पे हो या क्या काम कर रहे हो, आप छुट्टी मनाओ। बोली नहीं छुट्टी नहीं मना सकते, रात के 12 बजे तक मुझे सबमिट करनी है। Oh my और God. रात के और क्योंकि क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स से 1 घंटा आगे है, जी हाँ। इसका मतलब हमारे न्यू साउथ वेल्स क्वींसलैंड से 1 घंटा आगे, इसका मतलब कुल 1 ही घंटा बचा था। ठीक है, और बोली नहीं जल्दी भेजो। मैंने भेजा और फिर 12 बजने में 1 मिनट 11:59 पर इन्होंने सबमिट किया। 11:59 न्यू साउथ वेल्स टाइम रॉबिन ने सबमिट कर दिया और उसके जरिए हमको $10,000। Oh, what a wonderful. So Robby is really our funding queen. Okay, that's so Oh, it fun. takes many people, doesn't it, to help you get there. So getting women involved in this, how did you get so many women out here? Oh, just because वो
How did हमारी तरह रॉबी और मेरी तरह जो अच्छा। अपने हाथ से काम करना चाहते हैं, अच्छा। जिन्होंने बहुत दूसरे प्रोफेशन किए हैं। हम लोग दोनों, रॉबी डायरेक्टर चाइल्ड केयर थी, आई वर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जगह एज पॉलिसी एंड एनालिस्ट, एंड मैंने ओवरसीज भी काम किया। लेकिन यहाँ पीछे हमारे जो आप देख रहे हैं, ये सब लोग रॉबी और मेरी तरह बहुत ही उनकी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, लेकिन वो लोग अपने हाथ से काम करना चाहते हैं, औजारों के साथ काम करना चाहते हैं, अपने मनपसंद की चीज़ें बनाना चाहते हैं। कई बारी हम क्या बनाना चाहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे अगर हमारे पास औजार को यूज़ करने का हमारे पास एक तरीका है, अगर जानकारी है, तो हम कई चीज़ें बना सकते हैं। एंड ऑल्सो वी ऑल्सो सी दिस as a pathway for younger women into apprenticeship. अच्छा। और ये सरकार का जो the government focus on gender equality in all trades. बहुत Yes, that's right. And we've also we've connected with the ACT Women's Plan. So Minister Yvette Berry heads up that plan, and Womens Shed Canberra align a lot with the strategies and the focuses of that action plan. And we're just so thrilled to be here for the women of Canberra. And we see this not as a flash in the pan, but a lasting legacy for the women of Absolutely. Canberra. Yeah. It is, मैं तो कहूँगा अभी स्टार्ट हुआ है and it should go on forever. Yes. So how often you guys meet for a workshop or तो something? हर शनिवार को Every Saturday? हर शनिवार को 10 बजे से 1 बजे तक हम मिलते हैं। अच्छा। आप हमको जो है हमारे फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमको info@canberrawomenshed.com.au पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑल्सो womensshedcanberra@gmail.com पे। अच्छा। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। और हमारा अल्टीमेट एम जो हम लोग का है, टू हैव अ सोशल एंटरप्राइज फॉर वुमेन, Very where nice. we are upcycling old furniture, restoring old things, especially furniture, wooden things, and where we are creating something new and lasting. So with the imprint, on environment, reducing the environmental imprints and Right. saving the environment. Very nice, very nice. So that's one of the streams, Manish. The other stream is mental health and wellbeing for women. That's really important to us as well. Yeah. And we have a venue at the Jerrabumba Wetlands where we're able to access that venue the last Sunday of every month. And we have different sessions that we hold there for the women, from music, dancing, art and craft, floristry. Okay. So we just have that last Sunday. Yeah. And वहाँ पर जो है हम breathing exercises. In future we plan to have some gourmet a chef coming and teaching us about pastry. बहुत That बढ़िया। one is open. जो भी आप चाहते हैं, आप हमको जो है सजेशन भेजें, हम उसके मुताबिक एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। क्योंकि जो जेराबेम्बरा वेटलैंड साइट है, वो है नेचर, कनेक्टिविटी, मेंटल हेल्थ, और जिसमें हमारे कई मेंबर्स हैं जो जिन्होंने काफ़ी वुडवर्क किया हुआ है, बट एट दिस स्टेज वो ज्वाइन कर रहे हैं हमें, क्योंकि वो कनेक्टिविटी चाहते हैं। वो इतना वुडवर्क नहीं करना चाहते हैं। So like we have other members who have also joined for connectivity, and they want to experience different things. अच्छा। So because we are so lucky, और क्योंकि हमको कम्युनिटी का इतना सहयोग मिला है, Absolutely, I can see इतना that. सहयोग मिला है कि उसकी वजह से हम जो है कई चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी फंडिंग और वो सब के जरिए हम लोग रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं। So I've got to say we had so much fun as well with establishing Womens Shed Canberra. On the night of our launch, which was the 25th of September, we were meant to only cap at 20 people being able to come. Now let Sunita know, I think we've got 42 people coming. Wonderful. Good to see. And we thought that अगर एक साल में हमारे पास 34 मेंबर्स हो जाएंगे तो हम बहुत खुश होंगे। Very nice. क्योंकि वो जो है हमारा एक ना सस्टेनेबिलिटी फिगर था हमारा,
बट आज की डेट में हमारे 50 more than 50 members we have paid. बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, इट्स अ गुड स्टार्ट विद इन 50 members in less than 50 days. डेज, बहुत बढ़िया। So do have a look at our Facebook page. Right, So it's women_shed_Canberra. Oh, that's our Instagram. Yeah, Wonderful. our Instagram and Facebook. एंड जाते जाते सुनीता जी, आप अपने हिंदी में हमारे जो भारतीय महिलाएं हैं उनको कुछ कहना चाहेंगी कि वो जो घर में खाली खाना बनाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, वगैरह करती हैं, लेकिन ये भी कर सकती हैं। अरे वो इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिलता है करने का। आइए हमारे पास, आइए, हम आपको मौका दिखाएंगे और आप करेंगे। और जो काम औरतें कर रही हैं इस समय, जो घर में भी कर रही हैं, वो इतना वैल्यूबल काम है। आप बहुत वैल्यूबल काम कर रहे हो घर में। अगर आप अपना घर नहीं संभालोगे तो आपका पूरी फैमिली जो है बिखर जाती है अगर औरतें नहीं संभालती हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ वही करिए, आप आके हमारे साथ वो काम करिए जो भी आप करना चाहते हैं, जो आपका मन करे। ठीक है, सबके अपने हाथ के साथ। और इतने हुनर है हम लोगों में। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं घर में अपने आप कई चीज़ें बनाती थी क्योंकि मुझे वुडवर्क में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। और उसके बाद जब मुझे मौका मिला सॉल्ट का ट्रेनिंग लेने का तो मैंने भी वो किया। तो आज ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जो है सब लोग, हम घर में भी काम करते हैं, हम प्रोफेशनली भी काम करते हैं। Right. और फिर हम कई चीज़ें करते हैं। एंड एट सम टाइम वी हैव टू फाइंड टाइम फॉर आवरसेल्व्स। But no matter what, we really believe that Womens Shed Canberra is an organisation that will support all women in this region. And we believe too that if one woman is supported, she then goes on to support herself, her partner, her family, and the whole community benefits. Very nice. Yes. Yes. Thank you so Well much said. for coming. Thank you. We are multi-ethnic. We are 18 plus, any age. We are gender, inclusive in every way of, both disability and gender identity. You just contact us. बहुत बढ़िया। Thank you. It was lovely talking to you. All the best wishes. आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली टू बोथ ऑफ Happy यू Diwali एंड टू एवरी वुमन आउट देयर। Yeah. और कल विश्वकर्मा है तो हम अपनी विश्वकर्मा आज आज मना रहे हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लवली, बाय बाय।